Dear students, today we are going to read another paragraph of our textbook. It is chapter The Merchant of Venice, again on page number 56 in the demarked portion. The paragraph starts from here. To this question the Jew replied, Signor Antonio, on the Rialto many a time and often you have railed at me about my moneys and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of our tribe. And then you have called me unbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish garments, and spurned at me with your foot as if I was a cur. Well, then, it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. Has dog money? Is it possible a cur should lend 3,000 ducats? Shall I bend low and say, Fair sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you called me dog. For these courtesies I am to lend you monies. Antonio replied, I am as like to call you so again, to spit on you again, and to spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break, you may with better face exact the penalty. Why, look you, said Shylock, how you storm. I would be friends with you and have your love. I will forget the shames you have put up upon me. I will supply your wants and take no interest for my money. This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock, still pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage spot a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. Content, said Antonio, I will sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. Bassanio grew angry when he heard this. He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond. But Antonio was perfectly sure he ran no risk and cheerfully agreed to the penalty as soon as the bond was signed and money taken. Bassanio left for Belmont. Dear students, in this paragraph, when uh, Antonio and Bassanio, they both went to Shiloh for the purpose of getting money. They asked Shylock for money. Okay? And to this question, the Jew replied. The Jew replied to them. Who was the Jew? Shylock. He replied to these two friends with respect that on the Rialto many a time and often you railed at me कि रियाल्टो एक्सचेंज पर बहुत बार आपने मुझ पे ताने कसे, मेरी बेइज्जती की, ओके, मुझे ब्लेम किया एंड और मैंने क्या विद पेशेंस मैंने इस चीज़ को बर्दाश्त किया. ओके, क्योंकि क्या फॉर सफरेंस इज द बेज ऑफ ऑल आवर ट्राइब. तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कौम की तारीफ इस अंदाज से की कि इन चीज़ों को बर्दाश्त करना उनकी कौम के लिए ये उनकी आदत है, ये उनका इम्तियाज़ है, ये उनकी शान है. और बहुत बार का देन
यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर। उन्होंने एंटोनियो से कहा कि आपने मुझे बहुत बार अनबिलीवर कहा। अनबिलीवर मीन्स वन हु डज नॉट बिलीव, जिसे हम क्या कहते हैं, काफिर। आपने मुझे काफिर नाम से पुकारा। ओके, कट थ्रो डॉग एंड स्पिट अपॉन माई जिविश गवर्नमेंट्स। आपने मुझे कट थ्रो डॉग कहा। दैट आई एम केयरिंग ओनली फॉर माई सक्सेस। मुझे अपनी कामयाबी की परवाह है और बाकी लोगों के बारे में मैंने से नहीं सोचता हूँ। एंड एट मैनी टाइम्स यू स्पिट अपॉन माई जिविश गवर्नमेंट्स। आपने बहुत बार मेरी इस यहूदी लिबास पर बहुत बार थूका। ओके, एंड मैनी टाइम्स यू स्पॉन्ड एट मी विथ योर फुट। बहुत बार मुझे क्या अपने पाँव से धकेला। एज इफ आई वॉज ए कर, जैसे कि मैं कोई, उसने किसके साथ, कुत्ते के साथ तशबीह दी। वेल देन इट appears you need my help, and now you need my help, you have come to me। और अब आप ये सब के बावजूद आप मेरे पास आए हो फॉर मनीज। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हैज अ डॉग मनी? हैज अ डॉग मनी? क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्या कुत्ते के इतना पॉसिबल है दैट अ डॉग हैज गॉट मनी? क्या मैं इतना लो आ जाऊं आप पर? क्या आप मुझे हर बार ये ताने देते रहे हैं? प्रीवियसली आपने मुझे ताने दिए हैं, नाउ यू हैव कम टू द डॉग फॉर कर्टसीज, कि मैं आपको ये पैसे दे दूं। आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि यहाँ पे शेलॉक एंटोनियो से वापस ये कहता है कि आपने मुझ पे इतना सब कुछ किया है, आपने मुझे ब्लेम किया है, आपने मुझ पे स्पिट किया है, थूका है आपने मुझ पे, आपने मुझे बहुत बार धकेला है, तो इतना इस सब के बावजूद आप ये चाहते हैं कि मैं आपको पैसे दे दूं। तो ये सब कुछ क्यों किया? एंटोनियो को उकताने के लिए। अब एंटोनियो का रिप्लाई देख लीजिए। एंटोनियो रिप्लाइड, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन दैट आई विल अगेन डू इट। Whatever I did in the past, now again I will do it. I can again spit on you. Okay, I again label charges on you. That I can again blame you. Dear students, here you understood that Antonio used his words again, and he again blamed Shylock that he will repeat his words, whatever he did it in past, that he can do it now also. Okay? Why, look you, said Shylock, how you storm. I would be friends with you and have your love. I will forget the shames you have put upon me. Shylock replies कि नहीं, मैं ये सब कुछ भूल जाता हूँ. Whatever happened in past, now let us be, मैं आपको friendly, I will friendly give you this money. I will supply your wants and take no interest for my money. जो कुछ मैं आपको दूं, मैं उसमें से आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले लूँगा। तो इस पर क्या, दिस सेमिंगली काइंड ऑफर ग्रेटली सरप्राइज्ड एंटोनियो। ये काइंड ऑफर जो आ गई शेलॉक की तरफ से इस किस्म की, तो इसने एंटोनियो को सरप्राइज कर दिया। And then Sherlock, still pretending kindness, and that all he did was to gain Antonio's love. Sherlock ने क्यों ये सब कुछ pretend किया, ये दिखावा किया? जस्ट एंटोनियो का लव जीतने के लिए, एंटोनियो को उसको जीतने के लिए, उसके साथ फ्रेंडली रहने के लिए। अगर ये सिर्फ एक दिखावा था, he offered the money that he won't take any interest from them. तो this seemingly kind offer greatly surprised Antonio. Then Sherlock, still pretending kindness, and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only, this is the point, only Antonio should go with him to a lawyer. एंटोनियो को क्या करना है? सिर्फ शेलॉक के साथ एक लायर के पास जाना है,
and there they have to sign a bond that if he did not repay the money by a certain day, अगर वो एक फिक्स्ड डे तक ये पैसे ये रकम वापस नहीं दे पाए, he would forfeit a pound of flesh. हर जाने में क्या देंगे, एक पाउंड ऑफ फ्लैश. ओके, फ्लैश का एक पाउंड, फ्लैश गोश्त, इंसानी गोश्त, टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जिसे उसकी बॉडी से कहीं पे भी काटा जा सकता था. किसकी, एंटोनियो की. दैट शेलॉक प्लीज, और जहां से भी शेलॉक चाहे. ओके, इस पर क्या एंटोनियो एग्रीड, he agreed to sign this bond, and even then he agreed that he will say that Jew is kind on him. तो मैं ये कहूँगा आई विल साइन द बॉन्ड आल्सो, और मैं इस चीज़ को भी मान लूँगा कि द जीव इज काइंड टू मी. Bassanio grew angry with when he heard this. तो जिसके लिए ये था ये मनी, इट वॉज Bassanio, he grew angry. इस पर उससे बहुत गुस्सा आया. दैट दिस इज नॉट ए सिंपल डीड. He begged Antonio not to risk his life. He requested Antonio that he should not risk his life. उसे अपनी ज़िंदगी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, खतरे में नहीं डालनी चाहिए. हाउ, बाय साइनिंग दिस बॉन्ड. इस बॉन्ड को साइन करते हुए ही शुड नॉट रिस्क हिज लाइफ. बट एंटोनियो वॉज परफेक्टली श्योर, लेकिन एंटोनियो को यकीन था इस बात पर दैट ही रैन नो रिस्क, उसने कोई रिस्क नहीं ले ली. ही cheerfully agreed to the penalty as soon as the bond was signed and the money taken. Bassanio left the Belmont. Deed पर साइन हुए. As soon as they signed the bond, they got the money and Bassanio left for Belmont. Bassanio Belmont के लिए रवाना हुआ. क्यों रवाना हुआ? That you know, to marry Portia. This is enough for the day, and inshallah in the coming paragraphs we will be concluding the lesson and we will go through the textual